अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन दाना। तो किस तरह बनाते हैं आपको मैं दिखा देती हूँ। 1 टेबलस्पून चिकन मसाला लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है, कुकिंग सोडा, 1 अंडा लिया हुआ है, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, फ्लैक्स सॉल्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, ऑरेंज फूड कलर। तो किस तरह बनाते हैं आपको मैं दिखा देती हूँ। चिकन, सारे पाउडर मसाले, लेमन जूस, कुकिंग सोडा, फ्लैक्स सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, सॉस, मैदा, कॉर्नफ्लोर, ऑरेंज फूड कलर, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हम नमक टेस्ट कर सकते हैं। मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। देखिए तो फ्रेंड्स, हमने चिकन दाने का मसाला मिलाकर रखा हुआ था, तो 1 घंटा हो गया है। ऑयल गर्म करने रख दिया हुआ है मैंने। तो अभी आपको मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है।
साइड हम चेंज कर लेंगे। फ्राई करने में हमें 5 से 7 मिनट लगेगी। देखिए तो फ्रेंड्स, हमारा चिकन दाना अच्छे से फ्राई हो गया है। तो ये चिकन दाना हो गया है। तो अभी आपको मैं सारे चिकन दाने इस तरह फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो मिलती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। देखिए तो फ्रेंड्स, हमारे सारे चिकन दाना रेडी हो गए हैं। तभी आपको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। कोयले का धुआं करेंगे हम इसमें। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह आप भी घर पर बनाकर खाइए। चिकन दाना बहुत टेस्टी बनता है। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।